please pay attention to the general instructions displayed on your screen. We request all of you to ensure that your display name matches the name you have registered with for the pre-conferences. This will help us to avoid hacking and also enable us to track participation roles for the entire series of conferences. The sign language interpreter's video will appear side by side on the screen if you are viewing through your laptops. If you are viewing on your mobile phones, swipe to find the sign interpreter's video. Those with hearing impairment who wish to see only the sign language interpreter on your screen, please use the pin feature to pin the video of the sign interpreter onto your screen. To hear translations of the main English audio in any of the 5 languages being offered, please click on the icon at the bottom of your screen in the meeting controls that says Interpretation to choose one of the 5 languages that you wish to listen to. Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi are the languages available. While listening to one of these languages audio, you can choose the option Mute Original Audio so that you will not hear the English audio channel and can hear the language you have chosen more clearly. In order to save live captions at the bottom of the screen, please click on the icon that says CC, Closed Captions, and the live captions provided in Zoom will appear. The pre-conferences are also live streamed on the Engage Disability Facebook page and YouTube channel, and those links will be shared in the chat for you to share on your own social media profiles. However, the sign language interpreter view and the language interpretations audio channels will not be available in the social media live streaming. So we encourage you to stay logged in here on Zoom and only share the links in your social media profiles for those who may not have registered. Thank you. Good evening and welcome to this penultimate pre-conference in this series of pre-conferences of leading up to Engage Disabilities National Conference on the theme Treasures of the Church, Celebrate, Recognize and Include. In addition to the instructions that you just heard, we regret that this evening we will not be having translation in Telugu. All the other languages will be available. Good evening to all of you who have been logging in week after week to this series of pre-conferences. And those of you who are joining us for the first time this evening, welcome, and we hope you will enjoy this session. Our hosts for this evening is the Indian Disability Ecumenical Accompaniment of National Council of Churches in India, NCCI IDEA. IDEA has been a part of the ED network since 2014 and is also the current chair of the Engage Disability Movement. Mr. Daulalim Naisial, the program executive of IDEA, and Mr. Jian Tolung Gonmai, the executive secretary of NCCI Youth Concerns, are our facilitators for this evening from NCCI IDEA. They will lead us through an exciting session on the theme, Disability as Diversity in the Design of the Divine. So over to the host team, Jian and the NCCI IDEA team. Thank you, Jessica, for the kind introduction and the opportunity given to the NCCI IDEA to be part of the pre-conference of Engage Disability. It is a privilege and honor to be the host of this last day of the pre-conference of Engage Disability. As Jessica has said, I will be the moderator for today's evening program as well. To begin with, I would like to straightforward go to the programs without delaying much time. I would like to request Reverend Dr. Asir Ebenezer, the General Secretary of the National Council of Churches in India, to give the welcome and the greetings from the NCCI IDEA Forum. Over to you, sir. Thank you, Jian. Dhanyavad, Jian. Friends
Greetings on behalf of the National Council of Churches in India. और NCCI की तरफ से मैं आपको अभिनंदन करता हूं। On behalf of the leadership of NCCI, I welcome you to this offering of pre-conference from NCCI IDEA. और NCCI की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। IDEA is expanded as Indian Disability Ecumenical Accompaniment. और आइडिया जिसका अर्थ है कि भारतीय सार्वभौमिक अशक्तता का एक संगठन या सम्मेलन। This is a program of the National Council of Churches in India, especially for nurturing disability inclusion in the Indian churches. और ये NCCI का एक कार्यक्रम है जिसमें हम जो लोग भारत में अशक्त हैं उनको कलीसियाओं में किस तरह से जोड़ना है इस बात पर चर्चा करते हैं। NCCI is a fellowship of 30 national churches and 45 national organizations coming together. और NCCI लगभग 30 राष्ट्रीय कलीसियाएं और 42 संगठन सामाजिक संस्थाएं हैं उनका एक Therefore, NCCI IDEA, disability program of NCCI, has the responsibility to nurture disability in these 75 nationwide organizations. और इसलिए NCCI का दर्शन ये है कि 75 से अधिक जो संस्थाएं हैं उन पर उनके बीच में रहकर इस प्रकार का कार्य करना है। IDEA has trained pastors in disability inclusion. IDEA ने बहुत सारे पासवानों को प्रशिक्षित किया है। They have helped churches to do accessibility audits. और उन्होंने कलीसियाओं को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए उनका विवरण लिया है। They have helped theological students and seminarians grow in disability inclusion. और उन्होंने धर्म वैज्ञानिक विद्यालयों के भी सहायता की है ताकि वो उन लोगों को सम्मिलित कर सके जो अशक्त हैं। NCCI IDEA has also developed policy guidelines for disability inclusion in churches and Christian institutions. NCCI IDEA ने ऐसी पॉलिसीज का भी निर्माण किया है और ऐसे मार्गदर्शक का भी निर्माण किया है जिससे उन लोगों को सम्मिलित किया जा सके जो कलीसिया से बाहर हैं। Over the years, IDEA has also developed publications which are available for churches and Christians to understand disability and disability inclusion. और समय के साथ साथ आइडिया ने ऐसे कुछ प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया है जिससे ऐसे लोगों के विषय में जानकारी मिल सके जो अशक्त हैं। Many of the Christian organizations and churches have also grown in disability and they have started doing their own disability programs. और बहुत सारी कलीसियाएं और ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस बात को समझा है और वो लोग खुद ऐसे प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों के मध्य काम करने के लिए जो अशक्त हैं। For example, because of IDEA work, Church of South India have started something called DISHA, Disability Inclusion for Solidarity and Holistic Accompaniment. और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि दक्षिण भारत में दिशा नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके विषय में बताया गया है। NCCI IDEA has also run a school of disability where for 3-4 days people come together and get trained in disability inclusion. और NCCI IDEA ने इस प्रकार के विद्यालयों की भी स्थापना की है जहां पर ऐसे लोग आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, 2-3 दिन रुक सकते हैं। Recently, NCCI IDEA has started conducting fellowship groups for people with disability to come together, share their experiences, grow in coping, and also help the church grow in disclosure once in a month. और पिछले कुछ समय से महीने में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम भी NCCI कर रही है जहां पर लोग जो अशक्त हैं वहां पर आ सकते हैं, अपने अनुभवों को बांट सकते हैं। If you require anything of handholding, resources, accompaniment with regard to growing in disability inclusion, please do not hesitate to contact us. और यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार से उनके ऐसे लोगों के मध्य काम किया जाता है तो कृपया हमसे संपर्क करने से ना झिझकें। I thank all those who have worked very hard to put together this program for this evening. और आज के शाम का जो कार्यक्रम है उसके लिए जितने लोगों ने आज की तैयारी की है उन सभी को मैं बहुत आभारी हूँ।
This, in one way, is a conclusion of what we did the last 9 webinars. और ये एक प्रकार से आज की सभा जो है एक सारांश है उन 9 कार्यक्रमों का जो पहले जो उन सभाओं का जो पहले ही हमने कर ली. Today we want to understand disability as a design of God, diverse design of God, and disability as part of that design. और आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अशक्तता परमेश्वर के विभिन्न प्रकार की रचनाओं का एक भाग है, हिस्सा है. So we will listen to many biblical passages. We will have occasion to engage with each other, discuss with each other, and understand Bible as how disability is part of God's design of diversity. और हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे. आज हमें वचन से भी कुछ पढ़ने को मिलेगा और हम इस बात को देख पाएंगे कि किस प्रकार से बाइबल में अशक्तता को परमेश्वर की विभिन्न रचनाओं में से एक रचना के रूप में देखा जा सकता है. All these days we have been listening to people, we have been listening to stories, watching videos. Today we are going to talk to each other. और इतने दिनों से हम लोगों को सुनते आ रहे थे, हम वीडियो देखते आ रहे थे, लेकिन आज हम एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं. So engage with each other so that we can learn more. तो इसलिए एक दूसरे से आप वार्तालाप करते रहें और ताकि हम और भी बातों को सीख सकें. We have located this program purposely in the youth cluster program area so that we can engage young people in disability inclusion in the churches. और हमने जानबूझकर इस कार्यक्रम को ऐसे लोगों के मध्य किया है जो जवान हैं, ताकि वो लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को कलीसिया में कर सके और उसमें शामिल हो सके. So I thank the executive secretary for NCCI Youth Concerns, the program executive for NCCI Idea, and the core group members of NCCI Idea for putting this together for us today. और इसलिए मैं एनसीसीआई आइडिया के तमाम कार्यकर्ताओं का, कार्यभारियों का और पदाधिकारियों का बड़े ही आभारी हूं कि इस प्रकार से हमको अवसर दिया. May God make this a blessing for us and for the churches and the institutions that we serve. और परमेश्वर होने दे कि हम सबके लिए आशीष का कारण हो सके और उन कलीसियाओं को जिनकी हम सेवा करते हैं. Thank you. Back to you, Jian. धन्यवाद. Thank you, sir, for the welcome and the greetings from the NCCI Idea about the programs that we do. धन्यवाद सर, एनसीसीआई की तरफ से इस प्रकार का अभिवादन लेकर आने के लिए. Now we will have a first session, a session for storytelling. अब हमारा पहला सत्र होगा, जो सत्र जो है वो स्टोरी या कहानी को बताने वाला सत्र है. In this session, we will have 2 stories. One is recorded video and one is a storytelling in person. और इस सेशन में, इस सत्र में हमारे पास 2 कार्यक्रम है. एक तो पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है और दूसरा एक व्यक्ति की गवाही है, कहानी है जो हम सुनेंगे. The first story, which is a recorded video, is from Mr. Dolalem Naishal, the program coordinator of NCCI Idea. और जो पहला वीडियो है वो एनसीसीआई के एक पदाधिकारी का है जिसको हम सुनेंगे. The video that he will be sharing, the story will be sharing, is on the theme of theological journey and inclusion in the church. और जो स्टोरी, जो कहानी वो बताने वाले हैं वो है धर्म वैज्ञानिक यात्रा और कलीसिया में सम्मिलितीकरण के बारे में. And the second story will be shared by Dr. Aishwarya Rao. दूसरी कहानी जो है वो डॉक्टर ऐश्वर्या राव के द्वारा बताई जाएगी. She is the founder of the Better World Shelter in Chennai. और वो बेटर वर्ल्ड शेल्टर चेन्नई में एक संस्था है, उसकी संस्थापक है. And she will be sharing on the topic vulnerability and struggles of women with disabilities in the context of the church. और कलीसिया में पाई जाने वाली महिलाएं और उनसे संबंधित अशक्तता के बारे में और उनके निर्बलता के बारे में, वो संवेदनशीलता के बारे में वो बताने वाली है. So over to the tech team for the video. Friends, just Hi, one announcement. everyone. When this video is playing, those who wish to listen in Hindi, please click on the Hindi button only for the video. Then we will have the Hindi translation in the live main channel. Thank you. यदि आप हिंदी में इस वीडियो को सुनना चाहते हैं तो हिंदी वाले ऑप्शन पे नीचे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि हिंदी में आपको सुनाई दे. Hi everyone. At the very outset,
I would like to thank Almighty God and the National Council of Churches in India and Engage Disability for giving me this opportunity to share my testimony in this Engage Disability Programs Network. My name is Dolalem Nesil. You can call me Lema. I was not blind by birth. I lost my eyesight in the year 2007 due to accident. In the year 2007, I completed my matriculation and I have a break for 3 years. Then I went to Mizoram to resume my education career. I stayed at Salvation Army Home for the Blind, Fellowship, Mizoram, and continue my higher secondary and college. And I completed my degree there in Government Scholarship College under Mizoram University. Then I went to Bangalore for my theological journey. In the year 2016, I started joining UTC Bangalore, that is United Theological College, and completed my BD in the year 2020. From my childhood, I was born again in Christ and have a deep commitment to God to serve Him and proclaim the good news till the last breath of my life. Since I have a great commitment from my childhood, I have faced many challenges in my life. In the year 2007, I lost my eyesight. First, my ambition and desire to go for theological studies has been stopped to my mind. But luckily, God have given me the opportunity to continue my education and to the theological colleges. And I did BD there in Bangalore. It is not an easy task for a visually impaired to study and to be in the theological seminary. Since I face many challenges in the college, as all the materials or the study materials were challenging for me, since there is no braille books for all those theological books and Bible as well. A Bible is there, but all the theological books that we need to study is nothing is in braille. That is one of the main challenges we face in a theological college. So I need to take the book from the library, scan it and convert into PDF and read it in my system. I have a laptop like this. It is with screen reading software called ZOS, Zob Access with Speech. That is the screen reading software. With it, I used to read the books, listen the voice command, and I used to type and write the assignment. That is how I manage in my theological college. So doing assignment and doing all these things is very difficult for me sometimes because I need help from my friends to get the books from the library, and for editing as well. Sometimes it is very challenging. However, with only the grace of God, I could complete my BD in the year 2020. That is, I should say it is only for that I received the love of God and the care of UTC community and to all my friends and all the staff. So I should thank the UTC community for giving me that opportunity and I can be a part of their family. Meanwhile, when I come back to church after completing my BD, I gave petition to be one of the pastor in the church. But my petition and ordination was ignored due to my disability. It was a life challenging that the church ignored a person with disability to be a pastor or a minister in the church. Since they did not have a criteria
or the provisions for the visually impaired or a person with disability to become a minister in my church. As I belong to Presbyterian Church of India, Mizoram Synod, as of now, there is no disabled person or visually impaired or another handicap that become a pastor in my church. However, the congregation and the people were being opened for me in the church. However, the point is that they did not have any provision for the visually impaired to become a pastor. They feel that it is difficult for the visually impaired to become a pastor and minister the church and handling the pastor area or any kinds of activities that pastor has did. But we, the VI, have a great challenge to do all these things. However, I hope that the church will also awakening nowadays in many ways. They have the sense of feelings to love toward a person with disability. And in one way, I'm very happy that the National Council of Churches Indian Disabilities Ecumenical Accompaniment, NCC idea, give me the opportunity to be a part of their community. Now, as with the grace of God, I can join the NCCI idea as a coordinator since last year. It is a great privilege for me to thank the NCC idea for opening up such a great privilege for the visually challenged or the person with disability. Meanwhile, I have a great dreams and objectives toward the person with disability to build a community that is where there is no discrimination in the church. We wanted the church should be inclusive church in infrastructure, in the liturgy, as well as in any kinds of activities of the church that we continue nowadays. So my main purpose and aims objective is that to bring all the disabled into the church and worship together along with the so-called the normal or the people who are sighted. So the NCC ideas and the engaged disabilities aim is to fulfill, to build up the inclusive church in the society and in the community and in every aspect of our humanitarian life. So today, this is my testimony that to build up the inclusive church and to love the disabled, we should give not sympathy but opportunity, and let's have not sympathy but empathy toward the person's disabilities. Thank you. Thank you, Lema, for the testimony and the sharing of the story experience. धन्यवाद निमा इस सुंदर गवाही के लिए। Now, I would like to hand it over to Dr. Aishwarya Rao for the story on the said topic. Over to you, ma'am. डॉक्टर ऐश्वर्या राय के हाथों में एक समय सौंपते हैं। All right. Thank you so much, Lima, for the organizing this virtual conference, pre-conference today. And especially, I'd like to thank Asir, Reverend Asir, and my friend Jessica also for putting together this whole ensemble of weekly, thematic pre-conferences. It's really my joy and privilege today to share with you very briefly a beautiful real story that happened in my work about a month ago. Today's theme, especially disability as design, is very, very close to me. Wherever I go, Aish, excuse me, Aish, can you pause after each point, please, for the Hindi? Thank you. Yes. Yeah. Thanks. Sure. And today's theme, that disability is nothing but a design, is very, very close to me. And I truly believe that with my whole heart,
that disability is nothing but design. This is something that I always say wherever I go. And it is also my belief that there is no disability that cannot be overcome with a design They give a solution. pause for Hindi. Okay, okay, all right. आज का थीम अशक्तता एक रचना है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और जब भी मैं जहां भी जाती हूँ इस पर विचार करती हूँ. I'm very sorry, I didn't realize this. Yeah. So there is no disability that cannot be overcome with a design solution. और ऐसी कोई अशक्तता नहीं है जिसको हम उस पर जय ना पा सके और जब हमारे पास इस प्रकार का एक रचना का एक समाधान है. All of us believe in miracles. और हम सब चमत्कारों पे यकीन करते हैं. Sometimes I have difficulty in believing in miracles because कई बार मुझे समस्या होती है कि मैं चमत्कारों पे विश्वास करूं. But last month in October, there was a beautiful miracle that happened that renewed my belief in miracles once again. और पिछले महीने अक्टूबर के माह में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ जिसने मेरे विश्वास को चमत्कार पे के लिए फिर से उत्साहित कर दिया, मुझ पे विश्वास करने के लिए चमत्कार पे. I run a shelter for women with disability in Chennai. और चेन्नई में मैं एक शेल्टर चलाती हूँ ऐसे महिलाओं के लिए जो अशक्त हैं. There are about 60 women with disabilities in this shelter. और इस शेल्टर में लगभग 60 महिलाएं हैं जो अशक्त हैं. And we have women with locomotor disability. और हमारे यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जिनको लोकोमोटिक डिसेबिलिटी है. Speech and hearing impairment. जिनको समस्या है बोलने में और सुनने में, ऐसी महिलाएं हमारे पास हैं. और visual impairment. ऐसी महिलाएं हैं जिनको देखने में समस्या है. These are the main, we have all other disabilities, but these are the main disabilities we have. दूसरे प्रकार के भी ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार की अशक्तता के साथ जी रहे हैं, लेकिन ये मुख्य है जो लोग इस प्रकार से रहते हैं. On September 4th, 4 सितंबर की बात है. an elderly woman, about 50-year-old woman, who was speech and hearing impaired, was rescued by the railway police. और एक ऐसी महिला थी लगभग 50 वर्ष की रही होगी जो कि रेलवे पुलिस के द्वारा तो उसको छुड़ाया गया, बचाया गया. वो सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती. She was disabled, her hair was in disarray, she was dirty, she was crying. So the police found her and gave us a call. और उसकी हालत बहुत ही खराब थी, बाल बिखरे हुए थे और बहुत गंदी हालत उसकी थी और पुलिस ने हमको फोन किया और हमको बताया उसके बारे में. She was frightened. और साथ ही साथ वो डरी हुई भी थी. She was a woman who could not speak and hear and speak. और वो ऐसी महिला थी जो बोल नहीं सकती थी और ना सुन सकती थी. Or she could not read or write, no literacy at all. और ना ही वो पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी बिल्कुल. And she didn't even know her phone number. और यहाँ तक कि उसको अपना फोन नंबर भी नहीं पता था. She didn't know sign language. ना ही उसको सांकेतिक भाषा आती थी. Just some things she used to do with hands, no, some miming she used to do. और कुछ इशारे वो हाथों से कर रही थी. But she was mostly frightened. And you know, she didn't trust us, so she was not able to communicate anything to us. और वो बड़ी डरी हुई थी और वो हम पर भरोसा भी नहीं कर रही थी, इसीलिए हमको कुछ बता भी नहीं रही थी. So she was only able, in one piece of paper, she just wrote in Tamil, Kanakavalli. That is all she was able to write. और तमिल भाषा में उसने एक पेपर पे कुछ लिखा. Kanakavalli. Her name, Kanakavalli, she wrote. और उन्होंने अपना नाम लिखा, कनिकावली, जो उनका नाम था. But other than that, she was not which town, where is her house, any detail about her family, nothing she was able to communicate to us. और उसके अलावा वो कुछ भी हमको नहीं बता पाई कि उसका घर कहाँ है, उसके लोग कौन है, कुछ भी नहीं बता पाई. So every year like this, we get women rescued into our shelter. और इस प्रकार से हर साल हम ऐसी महिलाओं को छुड़ाकर अपने शेल्टर में लेकर आते हैं. So among all the women that we work with, this particular category of women with speech and hearing impairment who are unable to read or write that come is the most painful rescues that we do.
और इस प्रकार की महिलाएं अधिकतर हमारे शेल्टर में है, और इस प्रकार की महिलाओं के साथ जो हमारा जो अनुभव होता है बहुत ही मुश्किल होता है। So she came and she settled down. We gave her clothes, some food to eat. So she settled down in our shelter. और वो आई, हमने उसको भोजन दिया, और अंततः वो हमारे शेल्टर में जो है वो ठहर गई, वहां पर रह गई। And she was crying every day. हर दिन वो रोती थी, बस रोती थी। I want to go home. Take me home. Take me home. और हर दिन कहती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ। So we don't know where her house is. So we were like, really, every time she said, she'll come and fall. And when she sees me, she used to fall at my feet, hold my feet and say, take me home, take me home. और हर समय वो आती थी, मेरे पैरों में गिर जाती थी और कहती थी मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, इस प्रकार से। It's really painful. It was for all of us. It was really painful. और ये हमारे सबके लिए बहुत ही दुखदाई बात थी। So like this, over the years, no, we've had every year at least 3 women we are able to trace their families through the Aadhaar biometrics, through the Aadhaar fingerprinting. और कुछ कुछ महिलाओं को हमने उनके जो आधार बायोमेट्रिक जो होता है उसके द्वारा हमने उनके घर का पता लगाया, उनको घर भेज भी पाए थे। So we also took enrolled. So the whole process, we enrolled her for the Aadhaar biometric to find out if her address and phone number is already there in the database. और हमने उसका नाम लिखवाया आधार में जो बायोमेट्रिक होता है, हमको उसका घर का पता इसके द्वारा पता चल पाया। Sometimes it normally takes 5 to 6 weeks for the Delhi Aadhaar office to communicate to us. It's a long process. और बड़ा ही लंबा एक प्रोसेस है ये, कई बार 5-6 हफ्ते लग जाते हैं इस काम को होने में। So meanwhile, after some time she settled, but she was crying every day. So we started talking to her. और कुछ समय बाद वो वहां पर रहने लगी, और लेकिन वो हर समय रोती थी, और अंततः हम उनसे बात करने लगे। So she told her, we understood, she just said Muruga temple. Muruga is a South Indian Hindu god. Muruga temple. So that she was able to tell us. और वो हमको केवल इतना बता पाई, मुर्गा मंदिर, और मुर्गा मंदिर जो है वो एक दक्षिण का मंदिर है, दक्षिण भारतीय मंदिर है, उस प्रकार से बता पाई। Take me to Muruga temple. From there I know my house, she said. उसने कहा कि मुझे मुर्गा जो है मंदिर है उस तरफ ले जाइए और मैं वहां से अपने घर चले जाऊं। Then she said, how many Muruga temples are there? Where can we take you? We told her. और हमने उसको कहा कि बहुत सारे इस प्रकार के मंदिर है, कौन सी जगह आपको ले जाएं, समझ नहीं आ रहा है। Then she said, behind Muruga temple there is a fish stall. और उसने ये भी बताया कि जो मुर्गा टेम्पल मंदिर है उसके पीछे जो है मछलियों का तालाब है, और they drink soup there. और उसने ये बताया कि वहां पर जो है सूप भी पीते हैं लोग। So every time she sees, and then they sell flowers. और उसने फिर ये भी बताया कि वहां पर जो फूल बेचे जाते हैं। Yeah. So she's only saying flowers, fish, soup. That's her house. और वो केवल इतना बता पा रही थी कि मंदिर और मछली और फूल, और केवल यही वो अपने घर के बारे में बता पा रही। So we were all the more perplexed. और हम सब लोग बड़े ही दुविधा में थे। So with this clues, everywhere there are fish stalls, everywhere there are soup stalls. So how to find out her house? So this was our confusion. और ये जो सबूत थे ये बड़े ही हमको बड़ी दुविधा में डाले हुए थे, क्योंकि बहुत सी जगह मंदिर है, मछलियां मिलती हैं और सूप भी मिलता है, कहाँ उसको लेकर जाए। So then what one of my coordinator in the shelter, she took on Google, she started showing Muruga, she downloaded all Muruga temples. और जो हमारे कोऑर्डिनेटर है उन्होंने गूगल में बहुत सारे जो मुर्गा मंदिर है उसके विषय में जानकारी सब निकाल ली और पूछने लगी उनको। She started showing. Every day we used to take her in an auto, every 1 or 2 days in an auto, and take her to Muruga temples in Chennai. और चेन्नई में जितने मुर्गा टेम्पल मंदिर है उसमें हम उनको हर दिन लेकर जाया करते थे ऑटो में। So she used to say, no, this is not the thing. और वो कहती थी ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करके। Then we downloaded all the on Google all the Muruga temple pictures and started showing her. और तब हमने गूगल में तमाम जो तस्वीरें थी उनको डाउनलोड कर दिया और फिर उसको दिखाया तस्वीरों।
Then she saw Tirutani. There is a Tirutani Muruga temple. She saw that and she just started jumping. That one, she said. That's the temple, she said. और अंत में उन्होंने त्रितनी नाम का जो मुर्गा टेम्पल है, मंदिर है, उसको देखा और बड़ी खुश हो गई. वो नाचने लगी और कहने लगी यही है, यही है, यही है. So next day morning, a team of our people, we don't know any, just Google photo we have. That is all the clue we have. So we said we'll go. So two friends, two of my staff, we hired a car, put her in the car, and they went for Tirthani. Is about 2 hours journey from Chennai. और हमारे स्टाफ 2 लोग थे और हमने गाड़ी को बुक किया और हम लोग जो तिरतनी जो जगह है वहां पर चले गए, जो चेन्नई से 2 घंटे का रास्ता था. So we put her in the car and they were going, and just before Tirthani there is a road that goes to Arakonam. और जो तिरतनी है वहां से एक रोड जो है अरकोनम जाती है. As soon as the car went there, she recognized the road and she said, take that road, she said. और जैसे ही गाड़ी जो है उसके घर की तरफ गई, उसने उस रोड को पहचान लिया, सड़क को पहचान लिया, बोला कि यही वो सड़क है, उधर ले चलो. So then they went. Then they found the fish market. और तब वो गए और उनको मछली का जो बाजार था वो मिला. Or those fish stalls were there, the flower stalls were there. और वो फूल बेचने वाले जो थे वहां पर थे. It was behind the Arakonam Muruga temple. और ये जो था वो अरकोनम मुर्गा जो मंदिर था उसके पीछे का हिस्सा था. Not Muruga temple, there was another temple behind that temple. और वो मुर्गा मंदिर नहीं था, कोई दूसरा मंदिर था, उसके पीछे था उसका. Then they went into the village and we took her. Then the whole village came and everybody came and they recognized her and they took her home. और हम उसके गांव में उसको लेकर गए और गांव के तमाम लोग वहां पर आ गए, सब लोगों ने उसको पहचान लिया और फिर हम उसको उसके घर ले गए. So it's like finding they'll say, in English there's a proverb, finding a needle in a haystack. और ये एक प्रकार से ऐसा था कि मानो भूसे की ढेर में सुई को ढूंढना. Like that. So there are 7 crore people in Tamil Nadu, but one woman who is speech and hearing impaired, lost, far away from home, but she was able to go home. और चेन्नई में बहुत करोड़ों लोग हैं और हम फिर भी ऐसे समय में उसके घर को ढूंढ पाए, उसको उसके घर भेज पाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. I didn't have belief that we will find her place. मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हमको उसका घर मिल पाएगा. When they called and they told and then they sent videos and photos, all of us started crying. और जब हमने उनको कॉल किया और उन्होंने जब वीडियो देखा और हमको घर मिल गया तो सब लोग हम लोग रोने लगे. She has a very old mother. उनकी माताजी बहुत बूढ़ी माता थी. So that old mother came and thanked all of us. और वो बूढ़ी माता आई और हम सबको धन्यवाद देने लगी. And everyone, they were very happy to get her back. और सब लोग बड़े खुश थे और उसको वापस पाकर बहुत खुश हुए. So this just reminds me of a parable in the Bible. और बाइबल में मुझे एक दृष्टांत की याद आ जाती है. So one woman loses a coin and she keeps on searching the whole night. With a lamp she goes and searches for the coin. और एक स्त्री का जो है वो सिक्का गुम जाता है, वो खोजती है, दीपक जलाकर ढूंढती है. And then when she finds it, she goes and runs and tells everyone how she found that lost coin. और जब उसको वो सिक्का मिल जाता है तो वो दौड़ के सबको बताती है, खुश होती है कि देखो उसको जो सिक्का गुम गया था वो मिल गया. And this is compared, to much rejoicing in the presence of the angels. That really, I thought that's the exact feeling that we all felt. और हमको मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे स्वर्गदूतों के सामने बिल्कुल आनंद मनाया जा रहा हो, ऐसा महसूस में हो. So today, I want to just tie it back to our theme. Disability is nothing but a diversity in design. और इसलिए इस बात को मैं आज के जो मुख्य विषय से जोड़कर देखती हूँ कि असक्तता और कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर यानी दैवीय रचना का एक भाग है. So people with speech and hearing impairment,
get along so much. They're able to do everything compared, just like people with able to speak and hear with the help of technological aids. और वो लोग जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो भी आजकल की तकनीकी की सहायता से बहुत सारे काम कर सकते हैं. We saw our friend who spoke before me. और हमने अपने मित्र को देखा जो मुझसे पहले, जिन्होंने बताई अपनी गवाही. How with the help of JAWS software he's able to communicate, he's able to, work and study and, be a very important part of our community, our group. और जो तकनीकी की सहायता से वो किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई करी, अध्ययन किया, और किस प्रकार से वो हमारे समुदाय के लिए किस प्रकार से बड़े उपयोगी व्यक्ति बन पाए. So my whole message today is this, that disability can be overcome with a design solution. और मेरा पूरा संदेश यही है आज के दिन की, असत्यता पर जय पाई जा सकती है जब हमारे पास ये रचनात्मक एक समाधान है. So otherwise there's no rocket science about disability. नहीं तो और कोई तरीका नहीं है इसको जय पाने का. Thank you so much for the opportunity once again, and I wish IDEA and Engage Disability, and I thank them for this opportunity. धन्यवाद इस मौके के लिए, हम सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ. Thank you, Dr. Ashwari Rao and Dolalam Ashok, for the wonderful stories that you have shared to us. धन्यवाद डॉक्टर श्रेय और दूसरे भाई जिन्होंने ये गवाही को दिया, बहुत ही सहायता मिली इससे. Now we will have the second session for the exegetical reflections. और दूसरा हमारा सत्र है जो है exegetical reflection. First, we have Reverend Devajyoti Kumar, Reverend Vinod Victor, and myself will take the exegetical reflection on 3 Bible verses. और 3 अलग-अलग लोग, रेवरेंड ज्योति कुमार और दूसरे लोग हैं जो इस प्रकार से अलग-अलग विषयों पर आज बांटेंगे. First, we will have a passage from Exodus chapter 4, verses 10 and 11. और पहला हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 10 वचन से लेकर 11 वचन तक. For which I would like to hand it over to Reverend Devajyoti Kumar for the reflection. रेवरेंड देवज्योति कुमार जी को मैं समय देता हूँ. Thank you, Jian, for the introduction and the welcome. धन्यवाद जियान, परिचय के लिए और स्वागत करने के लिए. First of all, I would like to thank the ED team and the NCCI for hosting such wonderful pre-conferences. और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं ED टीम का और NCCI का इस प्रकार के सम्मेलन करने के लिए. Even during this pandemic time, and we could able to keep this topic, spoken in the nook and corners of this country through these pre-conferences. इस प्रकार से लॉकडाउन के समय में इस प्रकार की विषय पर हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं भारत के अलग-अलग कोने में बैठ करके. Today, I'm going to speak to you a brief idea about the topic that is given to us: disability as diversity in the divine, in the design of the divine. और मैं इस विषय पर आज बात करना चाहता हूं, असत्यता एक देवीय रचना की विभिन्नता का एक भाग है. Although we take support to the person living with a disability, but we still have something in our mind. Can we accept the disability as a design of God? और कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम असत्यता को परमेश्वर की रचना करके सोच सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? This is a very difficult question. और ये अपने आप में बड़ा ही एक कठिन सवाल है. Even if I ask you one thing, do people with a disability carry the image of God? We will say yes. और यदि मैं आपसे पूछूं कि वो लोग जो असत्य हैं, क्या वो परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे हाँ बनाए गए. Perhaps we would like to be very sympathetic to them, hence we say yes, they are image of God. हो सकता है कि आप उनके साथ सहानुभूति दिखाते हो, आप कहोगे कि हाँ वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है. But in reality, if you happen to see a person with a disabilities at your family, will you be able to accept him as the design of the divine? और लेकिन वास्तविकता में देखा जाए कि यदि हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो असक्त है और हमारे परिवार में है, तो क्या हम ये मानेंगे कि वो परमेश्वर की रचना है? It's very difficult for us. बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए सर.
especially the Christians, feel that it is not, as most of the time we'd say, it is not the design of God. और बहुत सारे मसीह लोग ये शायद ये सोचेंगे कि परमेश्वर की रचना वो नहीं है, परमेश्वर का योजना नहीं है। Once when I came out of preaching from an altar, a person approached me and said, Reverend, are you not be able to be healed by God? Then you have some problem with your faith. और एक बार जब मैं प्रचार करके लौट रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि रेवरेंड, आप को चंगाई नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि आपके विश्वास में कुछ कमी है। I have no problem of my own disability, as I am a person with a disability, but the person who sees me has some problem in accepting that as a design of the divine. और मुझे अपनी असक्तता के लेकर कोई समस्या नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो मुझको देख रहा है उसको समस्या है, वो मुझको परमेश्वर के स्वरूप में, रचना के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। Even sometimes the scriptures also, gives us some kind of idea to understand this perspective that it is not the design of God. और कई बार तो परमेश्वर के वचन में भी हमें कुछ इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है कि जैसे असक्तता परमेश्वर की रचना नहीं है। The metaphoric usage of disability often describes as disability as curse. और कई बार प्रतीकात्मक रीति से देखा जाए तो असक्तता को श्राप के रूप में देखा जाता है। Leviticus chapter 26 verses from 14 to 16, you see disability is understood as a curse. और यदि आप लेवी व्यवस्था उसका 16 से 23 वचन को पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि असक्तता को एक श्राप के रूप में दिखाया गया। Even disability is also understood as a punishment for disobedience to God's commandment. और कई बार इसको परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के रूप में एक सजा के रूप में देखा जाता है। Disability is often related to a cause of sin. और कई बार असक्तता को पाप का परिणाम के रूप में देखा जाता है। These are all the ideas we get when we read the scriptures about the disability. और ये वो इस प्रकार की विचारधारा है, जब हम वचन को पढ़ते तो हमको आती है, हमारे मन में आता है। Disability is compared to Israelites, the blindness. If you read Isaiah chapter 42 verses 18 to 20. और यदि आप यशाया उसका 42 उसका 21 वचन को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि इजराइल के अंधेपन को भी एक प्रकार का असक्तता के रूप में दिखाया गया है। Hearing impairment is compared to spiritual stubbornness. और कई बार सुनने की जो असक्तता है उसको आत्मिक बहरेपन के रूप में दिखाया गया है। So these are all certain passages which gives us a kind of a dilemma to accept disability as a design of the divine. और ये कुछ भाग हैं बाइबल के जिससे हमें बड़ी मुश्किल होती है इस बात को स्वीकार करने में कि वो लोग जो असक्त है वो भी परमेश्वर की रचना है। Then understanding of perfect. और स्वस्थ या सिद्ध होने की जो समझ है। Now my question is, who is the one draws the line between the perfect and imperfect? और मेरा सवाल ये है कि कौन इसको निर्धारित करेगा कि कौन सिद्ध है या स्वस्थ है और या कौन नहीं है। The Leviticus chapter 21 verses 16 to 23 would say, और लेवी व्यवस्था उसका 21 अध्याय 16 से 23 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, people with disabilities are considered to be perfect, hence they may not be allowed near to the altar. और लोग जो असक्त हैं उनको अस्वस्थ समझा जाता है क्योंकि वे परमेश्वर की वेदी के सामने नहीं आ सकते। They are imperfect, they are unwhole. और इसलिए वो संपूर्ण नहीं है, वो अधूरे हैं अपने आप में। Therefore they cannot serve the Lord. और इसीलिए वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। My dear friends, let me draw your attention to these passages. और मेरे प्रिय मित्रों, में आपका ध्यान इन अध्यायों की ओर लेकर जाना चाहता हूं। Maybe these passages do not, make us to accept the disability as a design of the divine. और हो सकता है कि ये जो भाग हैं वचन के, हो सकता है ये हमको शायद इस बात को स्वीकार करने में मुश्किल पैदा कर सकती है कि परमेश्वर के द्वारा असक्तता एक रचना है परमेश्वर की। Probably the able-bodied man will take advantage of these verses and would definitely say the disability is not the design of God. और हो सकता है कि ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं वो इस बात को, इसका एक गैर फायदा उठा सकते हैं इस बात को समझने के लिए। Let me draw your attention to another passage which is very fascinating to me very specially, and that is recorded in book of Exodus chapter 4 verse 11.
और इसलिए मैं आपका ध्यान एक दूसरे वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो है निर्गमन 4:10-11। This verse keeps me so confident of my own disability, and therefore I'm deeply rooted in the love of God. और ये वचन से मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, और इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में गहराई से बढ़ने की सोचता हूँ। God of Israel says to Moses, और इजराइल का परमेश्वर मूसा से कहता है, when Moses was bringing some excuses saying that I am a man with stammering mouth, I may not be able to complete the task that you give me, O Lord, so find somebody else. और जब मूसा जो है बहुत सारे बहाने परमेश्वर के सामने बना रहा था, कह रहा था कि प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, किसी और को ढूंढ ले। The Lord said to Moses, और परमेश्वर मूसा से कहता है, who has made man's mouth? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया? Or who makes the mute, और deaf, the seeing, or the blind? The language seems to be so harsh here. और यहाँ पर थोड़ी कठोर भाषा का प्रयोग किया गया है कि परमेश्वर बोलता है कि उसको गूंगा या बहरा या देखने वाला किसने बनाया है? Maybe we can say the person who is unable to speak, who have difficulty in seeing, who have difficulty in hearing. That is how the words should be. But I think I took a very old version. हाँ, और हो सकता है इस प्रकार से इसका अनुवाद किया जा सकता था कि वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, या जो देख नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैं पुराने अनुवाद को यूज कर रहा हूँ। Have not I, the Lord? और प्रभु कहता है क्या मैंने ही उनको ऐसा नहीं बनाया? So it is very clear where we see that God says to Moses, I am the one who created them. और ये बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने ही उनको ऐसा बनाया है। So this verse really inspires us to believe that we are the image and the design of the divine. और इस प्रकार से ये वचन बड़े स्पष्ट रीति से कहता है कि हम सब लोग जो हैं परमेश्वर की रचना है, उसके द्वारा बनाए गए हैं। Friends, let us gather together in our breakout rooms to discuss on this more in detail. और इसके विषय में और चर्चा करने के लिए हम अपने ब्रेकआउट ग्रुप में डिवाइड होंगे, बढ़ जाएंगे। See, you see a picture behind my face that is called a rainbow, or rainbow color we call it. और आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये इंद्रधनुष की एक तस्वीर है। Here also there are so many colors, and missing only few colors are here. और इस मेघ धनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, कुछ रंग शायद यहाँ पर कम है। If I ask you which color is important, यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रंग महत्वपूर्ण है, you may say I may like red, or I may like blue, or I may like yellow, or I may like green. और आप कह सकते हैं कि मुझे तो लाल पसंद है, मुझे पीला, मुझे हरा, और मुझे दूसरे रंग पसंद है। But all colors are important. लेकिन सारे रंग महत्वपूर्ण है, Whether able or disable, चाहे वो असक्त हो या सक्त हो। these are all your definitions, but according to God, we are His design. ये मानवीय परिभाषाएं हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हम सब लोग परमेश्वर की रचना है। Let us discuss in the breakout rooms more intensely. और इसके विषय में चर्चा करने के लिए हम ब्रेकअप रूम में डिवाइड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Reverend Devajyoti Aya, for the brief reflection from the passage Exodus chapter 4, verse 10 and 11 in regards to the image of God. धन्यवाद रेवन देवज्योति जी, प्रकाशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निर्गमन की किताब से हमको समझाया। Now we will have another reflection from the New Testament on the passage 2 Corinthians chapter 12 verse 9 from Reverend Vinod Victor. और दूसरा हम लोग एक अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 9 वचन। Over to you, Achan. Thank you, Gian, for this opportunity, and धन्यवाद जियान इस मौके के लिए। And we'll continue with this discussion on disability as a diversity in the design of God. और हम निरंतर इसी विषय पर चर्चा करते रहेंगे, असक्तता परमेश्वर के द्वारा एक विभिन्न प्रकार की रचना है। Now, many of us, when we have sicknesses, pray to God. और हम में से कई लोग जब हम बीमार होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। And our understanding is, in the Bible, all those prayers for healing is answered and people are cured or healed. और हम ये सोचते हैं कि जो भी प्रार्थना हम करते हैं
उनका उत्तर हमेशा मिलता है और लोग चंगे हो जाते हैं। But the passage that we read in 2 Corinthians chapter 12 and 9 लेकिन जो has a different perspective. लेकिन जो वचन हम दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं तो एक अलग प्रकार की दृष्टिकोण को बताता है। No, not all prayers are answered in the affirmative, saying yes. और हर प्रार्थना को हमेशा हाँ और आमीन में उत्तर नहीं मिलता है। Not all miracles involve healing. और ना ही हर प्रकार का जो चमत्कार है वो चंगाई ही होती है उसमें। Now, we should also note there are several stories in the Bible that does not end up in the healing of the person. और हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बहुत सी कहानियां बाइबल में है जहां पर हमेशा जो चमत्कार हुए वो चंगाई ही नहीं मिली है। The stories where God affirms that I am the one who created you with this different ability, and I am the one who will make sure that this is part of the diversity of God's plan and purpose in creation. और ऐसे कई पैसेज हैं बाइबल में जहां पर परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं जिसने तुझको इस समस्या के साथ इस दुनिया में भेजा है और मैं ही इस बात पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है कि तुम उसको पूरा कर सको। Now, what Paul is writing is this, there has been a thorn in my flesh. और पौलुस क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। A thorn given to me in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from being too elated. और वो कहता है कि एक शैतान का दूत जो है मुझको सताता है ताकि मैं जो हूं बलवंत बनूं। The 3 times he writes, I prayed to God about this, that it could leave me and I would be healed. और वो 3 बार कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। But God said, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Now people have asked this question, what was Paul's thorn in the flesh? और कई लोग इस प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर पौलुस के शरीर में वो कांटा क्या था? Now some people would say that this cannot be a sickness because God can heal all sicknesses. और कुछ लोग क्या सोच सकते हैं कि कोई बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर सारी बीमारी को चंगा करता है। But we see that Paul lived with this ailment, lived with this disability, praising God. और लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस इस प्रकार की असक्तता के साथ जी रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था, महिमा कर रहा था। In that 1 or 2 verses, he tells us several reasons why he was able to understand disability as part of God's diversity and plan in his life. और इन वचनों में वो हमको बताता है कि ऐसा क्या कारण है कि पौलुस जो है असक्तता को परमेश्वर की एक विभिन्न प्रकार की रचना का एक हिस्सा करके सोचता है। The first thing he says is disability as a design of God to keep me from being elated, too much elated. और पहली बात वो बताता है कि परमेश्वर की रचना होने के कारण असक्तता जो है मुझे भूलने से मुझे बचा कर रखती है, घमंड से बचा के रखती है। Paul had quite a lot of claims about himself, a Roman citizen, a Jew trained under Gamaliel, quite a lot of big things to talk about himself, an apostle who had interfaith with Christ. और पौलुस के पास ऐसे बहुत सारी बातें अपने बारे में बताने के लिए थी। उसके पास रोम की नागरिकता थी, वो यहूदी था और गमलीएल के द्वारा उसको शिक्षा मिली, बहुत सारी बातें थी। Yet, despite his repeated prayers, the ailment, the thorn, did not go away from him. लेकिन तो भी निरंतर प्रार्थना करने के बावजूद भी उसकी ये जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ। He would have asked the question, why is this thorn not going away from me? और हो सकता है वो इस प्रकार का सवाल पूछ सकता था कि परमेश्वर ये कांटा जो मेरे शरीर में चुभाया गया वो दूर क्यों नहीं होता? And one answer he finds is that is surely to keep me humble before the Lord. और एक उत्तर शायद उसको ये मिला कि इसके द्वारा परमेश्वर के सम्मुख वो नम्र बना रहता है। The fact is that our own different abilities, our own shortcomings keep us always God dependent. और ये सवाल ये यहाँ पर उत्तर ये है कि हमारी जो भी असक्तता है, हमारी कमजोरी जो है वो हमको परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाती है। Not my own strength, but not my own power. God, help me to depend on you and your power because you created me the way I am for a purpose with a design.
और अपनी ताकत पर नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहना मुझे सिखाती है कि परमेश्वर ने ही मुझको इस प्रकार से रचा है। Secondly, Paul writes that disability helps him to experience grace in its fullness much more than any other able-bodied person. और दूसरी बात पौलुस कहता है कि असक्तता परमेश्वर की रचना है ताकि उसके अनुग्रह की भरपूरी का अनुभव वो कर सके। Is in fact the strength to face adversities, to face storms, to face difficulties, to face turbulence in life. और ये वो सामर्थ है जिसके द्वारा वो मुश्किलों का सामना कर सकता है जो भी उसके जीवन में आती है। In our moments of weakness, in our moments of vulnerability, we depend more and more on the grace of God. और हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में हम अधिक से अधिक परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हैं। So when God calls us to live with our disability, God gives us grace as a companion to live with dignity with those disabilities. और जब परमेश्वर हमें असक्तता के साथ जीने के लिए बुलाता है तो परमेश्वर हमारे मन में उन लोगों के प्रति आदर भी भरता है जो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। Thirdly, Paul says, disability is a design of God for him to understand power made perfect in weakness. और तीसरी बात पौलुस कहता है कि असक्तता परमेश्वर की वो रचना है जिसके द्वारा वो ये समझ पाता है कि हम अपनी दुर्बलता में बलवंत होते हैं। No, predators normally prey on the weak, but when God perfects power through weakness, it gives us strength to face life's reality with resilience, with strength. God strengthens us in our weakness. और परमेश्वर हमारे कमजोरी में हमको सामर्थ्य देता है। When we heard all the stories of people who spoke before me and all of us, we know that we have our disabilities, we have our own weaknesses. But instead of complaining, instead of grumbling, we take control of life, saying, "Thank you, Lord. Help us to live with this fragility, depending on your strength, and make life meaningful with whatever facilities you give us. Help us to find your power in our weakness." और मेरे से पहले जिन लोगों ने भी बोला, हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारी कमजोरी में हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और हम परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनी कमजोरी के द्वारा ढूंढ पाते हैं। Now, when we understand that, fourthly, Paul writes, disability is a design of God that helps us boast gladly, help us live gladly with our weakness. और जब पौलुस ये लिखता है तो वो कहता है असक्तता परमेश्वर की वो रचना है जिसमें हम अपनी कमजोरी में भी आनंद मनाते हैं, खुशी से रहते हैं। When we realize that yes, we have no option, we'll have to live with this disability all our life, what happens is we learn to rejoice with our weakness, in our weakness, and seek the plan and purposes of God in that ailments and weaknesses we live with. और जब हमारे पास कोई साधन नहीं होता, दूसरा हमें मालूम है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम उस समस्या के साथ जीना शुरू कर देते हैं, उसमें आनंद ढूंढते हैं और खुश होते हैं, उस कमजोरी में हम बलवंत होते जाते हैं। Once we understand the design of God in the thorns that we carry, we begin to relish those thorns despite the pain, despite the agony, despite the marginalization we face. और हम जब उस कांटे के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी दिक्कतें आ जाए, हम अपने जीवन को निरंतर जीना सीख जाते हैं। And that's what Paul says, I learned to boast gladly of the weakness that God has given me. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दुर्बलता में आनंदित होकर जीना सीख लिया है। And finally, Paul writes, disability as a design of God for the power of God in Christ to dwell in me. और अंत में पौलुस कहता है कि असक्तता परमेश्वर का वो रचना है जिसमें मसीही की सामर्थ्य जो है मेरे अंदर वास करती है। Now, Christ truly lives where there is brokenness. और यीशु मसीह जो है वहां रहता है जहां पर टूटापन है। Christ comes near in our vulnerability and struggles. और प्रभु मसीह जो है हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में हमारे साथ आ जाता है। The cross, the bruised body of Christ that we see in the cross, is a gruesome image, but in that brokenness is also triumph of Christ. और जब हम क्रूस के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वहां पर बड़ी ही दुर्दशा में पड़ा हुआ, तो कई बार दुख भी होता है हमें, लेकिन हम देखते हैं कि यही जीवन जीने का सिद्धांत है और
जय पाने का एक सिद्धांत है। So what Paul says is this: disability is in fact the door through which the power of Christ enters into me, dwells in me, dwells with me, and gives me the strength to face whatever life's realities I should face. और पौलुस कहता है कि अशक्तता वो एक दरवाजा है जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आती है, मेरे साथ निवास करती है, और चाहे कैसी भी समस्या हो मैं उसके द्वारा सब कुछ का सामना कर सकता हूँ। Yes, God created me disabled, and it is part of the divine design of God, and I rejoice in it. His grace is sufficient for me. हाँ, मैं परमेश्वर ने मुझे इस तरह से रचा है और ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और मैं इसके साथ जीऊंगा, इसमें आनंदित रहूंगा। And God gives me strength to face all the struggles with it. And that's what this text is all about. और परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है कि मैं इसके साथ जीवन की हर समस्या का सामना कर सकूं। यही ये वचन हमको बताता है। Thank you, Jan, and we'll get on with this discussion and come back for more discussion and your thoughts and questions on this. और हम इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद जियान। Thank you, Achan, for the brief reflection from the passage which you have shared briefly on regards to the divinity, the design of God, from the perspective of grace and the power that God has given to all of us. धन्यवाद, आपने इस विषय पर बांटा और परमेश्वर के वचन के विषय में बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। Now the next passage which I would like to share is from the Gospel of St. Matthew, chapter 21, verse 12 to 17. और दूसरी बात जो मैं बांटना चाहता हूँ वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन से। I will not read the passage because of the time limit that we have. और समय के अभाव के कारण मैं वचन को पढ़ूंगा नहीं। The Gospel of Matthew gives us an insight that Jesus welcomed the excluded, the so-called excluded community to the house of prayer. मत्ती रचित सुसमाचार हमको ये बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं जो निष्कासित थे। When we read this passage, we may find the two distinct incidents which Jesus has did. और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम दो बातों को पाते हैं जो यीशु मसीह ने वहां पर की है। The first one is the demonstration of the act of cleaning the temple. और पहली बात यीशु मसीह वहां पर मंदिर का शुद्ध करते हैं। And the second part is the act of welcoming the blind, the lamb, which is the disability community in the Israel community. और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को यहूदी समाज में लेकर आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं जो असक्त हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। When we look into the Gospel of Matthew, we affirms that the presence of God is in the temple. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में थी। And at the same time, Matthew tries to portray how Jesus is hostile against the exploitative structure of the temple leadership of that time. और मत्ती ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस समय का जो मंदिर में जो तौर तरीके थे, जो शोषित करने वाले तौर तरीके थे, यीशु कैसे उनका विरोध में बात करता है। Those temple leadership are identified as the scribes, the Pharisees, the priests, the elders of the Jerusalem city. और ये जो मंदिर के जो अगुवे थे इसमें फरीसी, सदूकी और दूसरे लोग थे जो यरूशलेम शहर के रहने वाले थे। And we also see that in the temple is identified as a national identity, as a political identity, as a religious identity of the Israelite community or the Jewish community. और हम ये भी देखते हैं कि जो मंदिर था वो यहूदी समाज की राष्ट्रीय धरोहर था, उनका राजनीतिक और उनके सामाजिक पहचान उससे थी। And this has been more profound, particularly after the Maccabean revolt in the 2nd century BC. और ये मंदिर जो था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और विशेष करके मकाबियन का जो विद्रोह हुआ था 2री शताब्दी में, उसके बाद से। Since then, temple is portrayed as something which has been purified, which has been holy, and this has been perfect, particularly in the eyes of the people. और उसके बाद से लोगों की दृष्टि में ये जो मंदिर था उसको बिल्कुल शुद्ध समझा जाता था, उसको समर्पित किया गया था लोगों के लिए। With that understanding, the act which Jesus explicitly protests against was the unjust system that is
practiced openly in the temple with the permission of the temple authorities of the time. इसलिए वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोगों को शोषण कर रहे थे उस समय में मंदिर परिसर में. And the very act which Jesus cleansed was to cleanse the contamination of that practices which Jesus portrays there in his act of cleaning. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो अशुद्धता के काम, जो खराब काम वहां पर हो रहे थे, उनकी आलोचना करता है. This incident may take us to the vision of Prophet Ezekiel, chapter 40, verse 40 to 48, which plays an important role of the purification of Jerusalem and making it holy again. और इसके विषय में यहेजकेल 40 से 48 में पहले से बताया गया था, जो एक मसीही की आशा के समय की बात होनी थी जो यीशु मसीह कर रहे थे वहां पर. And this cleansing amplifies the coming of the new age, the age of inclusivity in the household of God. और ये कार्य था जो यीशु मसीह ने वहां पर किया, मंदिर को शुद्ध करना, वो एक प्रकार से परमेश्वर के जो आने वाले समय के विषय में जो वायदा किया गया था उसके विषय में बताता है. We may also look back in the 2 Samuel chapter 5 verse 8. It says, "The blind and the lame shall not come into the house." और हम ये भी देखते हैं कि दूसरा शमूएल 5:8 में इस प्रकार से लिखा है, जो अंधे हैं, जो चल नहीं सकते, वो परमेश्वर के भवन में नहीं आने पाएंगे. In that context, the people with disability are not allowed to come into the temple for worship. Rather, they are settled outside the outer gates of the temple. और इस तरह से हमें पता चलता है यहाँ पे कि वो लोग जो अशक्त थे, उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, उनको बाहर ही रहना पड़ता था. In the contrary of that, the act of cleansing is not limit the unclean people from entering the temple, but an act of bringing the authority of God through Christ as the cleaning structure, to clean the structure through Christ that has been hindered the worshipper from the temple service. और प्रभु यीशु मसीह का ये शुद्धिकरण का काम केवल लोगों के लिए ही नहीं था कि वो लोगों को शुद्ध करेगा, लेकिन ये भी दर्शाता है कि केवल यीशु मसीह के पास ये अधिकार था कि वो मंदिर में जो अराजकता है उसको सही करेगा और उन लोगों को आराधना के लिए जो रुकावटें थी उनको दूर करेगा जो आराधना के लिए आते हैं. Overall, the Gospel of Matthew portrays Jesus Christ as the Son of God, at the same time the Son of Man, that surpassed the temple authority. और मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र के रूप में दर्शाता है, जो मंदिर के अधिकारियों से भी ऊपर का ओहदा है. Because we noted in Matthew chapter 12 verse 6, it says, "I tell you, something greater than the temple is here." क्योंकि मत्ती 12:6 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो मंदिर से बड़ा है वो यहाँ पर है. This portrays that Matthew represents the sovereignty and superiority of Jesus Christ over the temple in the Jewish culture. और ये बताता है कि मत्ती जो है वो यहूदी मंदिर से बढ़कर के यीशु मसीह को दर्शाता है यहाँ पर. So this superiority of Jesus Christ over the temple has been proved with the act of miracle that Jesus has performed in a temple in the verse 14. और यीशु मसीह जो है वो मंदिर से भी बड़ा है, वो इस बात से साबित होता है जो यीशु मसीह वहां पर मंदिर में काम करते हैं वो लोगों को चंगाई करते हैं. 14 वचन में हमको मिलता है. We may also look back that the temple has been constructed, planned, prepared, and tried to build this temple by King David in the Old Testament. हमको ये भी पता चलता है कि ये जो मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम था, योजना थी, वो राजा दाऊद की योजना थी. Though he personally does not build, but the temple which has been constructed has been started, the promise has been started from the time of King David, and David is considered as the authority figure of the religious and political groups in Judaism.
और यद्यपि दाऊद ने व्यक्तिगत रीति से मंदिर नहीं बनाया था, लेकिन उसने ये योजना बनाई थी, और दाऊद जो है वो यहूदी धर्म में एक बहुत ही अधिकार रखने वाला व्यक्ति के रूप में बताया गया है। Yeah, and we may also look back into the 2 Samuel chapter 5 verse 8. It says that David was ascribed to something which he is hostile to the people with disability. It says that he did not allow the lame and the blind to enter the palace. और हम जब दूसरा शमूएल 5:8 वचन को पढ़ते तो वहां पर दाऊद को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि वो उन लोगों के प्रति उसके मन में बड़ी घृणा थी, वे लोग जो असक्त थे। This takes to the incident where the King David and his men they went to Jerusalem against the Jebusites, where the inhabitants of the land said to David, he said, "You will not come in here, but the blind and the lame will ward you off." और ये हमें उस कहानी की ओर लेकर जाती है जहां पर जेबूसाइट जो लोग थे वहां पर रहते थे, और राजा दाऊद वहां पर अपने लोगों को भेजता है और वो उस पर अधिकार करना चाहता है। With that comment, David has been taunted with the understanding of disability, which signifies the superiority over David, could be one of the theories which makes David hostile to the people with disability. इस प्रकार से एक विचारधारा का यहाँ पर पता चलता है कि मानो ऐसा लगता है कि दाऊद जो है ऐसे लोगों के प्रति जो है संवेदनशील नहीं था, या उसके मन में ऐसे लोगों के प्रति घृणा थी, वो लोग जो असक्त थे। For that incident, it could be one of the reasons which has been said that the blind and the lame are not coming to the house. और यही शायद एक कारण रहा होगा जिसके कारण ऐसा बताया गया है कि वे लोग जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ऐसे लोग जो हैं वो भवन में नहीं आने पाएंगे। So the incident which David has done to the people with disability and Jesus Christ as known to be the son of David, there's a big contrast into that. और इसीलिए जब हम दाऊद को देखते हैं और यीशु मसीह जो दाऊद का पुत्र कहलाता था, और दोनों के जो व्यवहार को हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों के जो व्यवहार में है बड़ी भिन्नता थी जब असक्त लोगों के विषय में हम बात करते हैं। So symbolically, the healing of the people with disability in the temple by Jesus Christ is something which portrays that what David did was wrong. And here the son of David, Jesus Christ, so-called the son of David, is undoing the wrong things that David has done. और ये मंदिर वाली घटना से हम इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दाऊद ने किया वो गलत था, और यीशु मसीह जो अब कर रहे हैं वो दाऊद की गलती को सुधार रहे हैं। This also identifies the supremacy of Jesus Christ over David. और ये एक प्रकार से यीशु मसीह को दाऊद से भी बढ़कर दर्शाता है। The mistakes which King David has done becomes the tradition of the temple. और जो दाऊद ने किया एक प्रकार से वो मंदिर की परंपरा बन गई। And the undoing of David by Jesus Christ by healing the people with disability is also the undoing of the practices and the structure and the tradition of the temple. और प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो उन जिस प्रकार से उसने अंधों को और लंगड़ों को उनको चंगा किया, एक प्रकार से उस परंपरा का जो दाऊद से चली आ रही थी उसका खंडन किया। And Jesus' act of cleansing the temple also signifies the cleansing of mind, heart, and strength and soul of the temple structure. और यीशु मसीह का जो मंदिर को शुद्ध करने की जो बात है वो दरअसल मंदिर में आने वालों की आत्मा, उनके हृदय और मंदिर में जो रूपरेखा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी शुद्ध करने की बात यहाँ पे शामिल की गई है। That temple structure is nothing but a scribe, the Pharisees, the priests, and the elders in Jerusalem, or the temple authorities. और ये मंदिर की जो रूपरेखा है, ढांचा है, उसमें जो यरूशलेम में रहने वाले याजक लोग थे और जो शास्त्री लोग थे और जो महायाजक लोग थे, वो सब लोग थे। This temple structure or the authorities of the temple are giving the priorities to the well-being and the welfare of the temple's economy rather than the people's welfare, that is need of the people physically and spiritually. और ये मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे, ये
इन्हें मंदिर की जो आर्थिक बातों की ज्यादा चिंता थी, बजाय इसके कि ये उन लोगों की चिंता करते जिनको शारीरिक या आत्मिक आवश्यकताएं थी। When we look to the verse, the ending of the verse, Jesus first invite the people with disability into the temple first, and then he healed them. He did not heal the people with disability first and invite the temple, but it is the vice versa. He first invite the people with disability first, and then he healed them. और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने मंदिर के बाहर रह करके लोगों को चंगा नहीं किया, पहले उनको मंदिर में बुलाया और उसके बाद उनको चंगा किया। This shows that the healing of the blind, the lame, without going through the ritual prescribed for the sick community or the people with disability community in the temple. Jesus inaugurated the new era, the era which both the able person, the disabled person are identified as a common body of Christ or the household of God. और इस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह ने ये दर्शाया कि वे लोग जो हैं, जो लोग अशक्त हैं, उनको किसी दूसरी तरीके से मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया ताकि सब लोगों को एक समान अधिकार मिल सके और सब लोग यीशु मसीह की देह के हिस्सा बन सके। And in this common identity, there is neither no inferiority, no superiority, but in this diversity, there is an identity that portrays but the identity of divine. और ये जो एक नई पहचान थी, उसमें कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, लेकिन हाँ, एक भिन्नता थी और ये भिन्नता थी परमेश्वर की रचना के कारण। So in this healing, Jesus, by this healing, demonstrated that people with disability are the integral part of the kingdom of God. और इस चंगाई की घटना से हमको यह पता चलता है कि वे लोग जो अशक्त हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य का एक अभिन्न अंग है। So this is my short reflection, and we will further discuss more in the group division. So before the division of the group for the group discussion, I would like to request Jessica for further announcement or any instructions. Over to you, Jessica. Friends, we will now have on the screen 3 breakout rooms which will appear. You can choose which breakout room you want to go to, depending on the text that is given there, and the person who is facilitating, you can choose to go into that particular breakout room. After your discussion, you will be brought back here into the main session when we will close. आपकी स्क्रीन पे 3 ब्रेकआउट रूम दिखाई देंगे। आप किसी भी उसमें रूम में शामिल हो सकते हैं और जिस विषय पर चर्चा की गई है, अब उनके नाम वहां पर बताए गए हैं, आप उसमें जा सकते हैं। Jeff, can you put up the rooms, please? We're seeing all the names. We have to go down. Yes, please scroll so that this, can you please scroll down so that you see at the bottom, there are 3 rooms given, 3 texts and the name of facilitators. Can you scroll down and each of you can join one of those rooms? Friends, you can start joining. Can you scroll all the way down and start joining, please? Thank you. Friends, whatever you're seeing on the screen, if you can scroll down throughout the list, go down, you will see 3 texts and you can choose which room you want to go to. Please scroll down and you will see the 3 texts and you can choose.
Friends, we will start assigning you to different groups, because if you are not finding it easy to do, we can do that as well. Jeff, can you start assigning people to the 2 rooms where there are not enough people, please? Thank you. Yes, yes.
Recording in progress. Welcome back, everyone. I hope we have enough time for discussion. आपका दोबारा स्वागत है। मैं सोचता हूं कि हमारा एक अच्छा वार्तालाप का समय रहा। Yeah, if we keep on discussing, there are so many things to discover in this topic, but since we have lack of time, we will try to conclude it soon as well. और अगर हम चर्चा करते रहे तो शायद बहुत समय हो जाएगा, लेकिन हमारे पास समय का कमी है, इसलिए हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। So I hope the groups have appointed each person to represent to share the discussion that you have discussed briefly in a group wise. If so, I would like to request a room number 1 to share what you have discussed. Can please mention the text? Yes, yes. Room number 1 is Exodus chapter 4 verses 10 and 11. Whoever is reporting from that group, can you please raise your hand so that we can spotlight you? Adrian? Adrian? Reverend Adrian? Yes, Deepak. Yes. Yes, Andrew. Yes, over to you. And then you're not audible. You're not audible. Reverend Adrian, you may have to switch to English. Reverend Adrian, you may have to switch to English. You're not audible. You're still not audible, Reverend. Go to the interpretation channel and then click. Hello. No, no, no. You have to go Still, to the, yeah, still you're not audible. yeah, go to the interpretation channel and off the interpretation. Then you will be all right. I think we have a technical problem. The person who's an interpreter cannot be, will not be able to speak in the English channel. Can someone else from that group report, please? Daniel, can you? So Daniel, sir? If we go to the English channel, we can hear you. Yeah. Daniel Victoria can speak. Yeah, he's speaking. Okay. Yeah, please. There were a couple of questions in the group, but we didn't have time to go through that. But the two main points that we discussed was everyone is created uniquely. The design of God is unique for each and every person, whether it's a normal person or a person with disability. We are created unique in the image of God. That was the main point that we discussed, and also that we should understand the difficulties of portrayal of disabled persons in the Old Testament in the context. So if we look at deeply into the context, we may have better understanding. And also another point of taking the portrayal of persons with disabilities and in the whole Bible as a whole, how
the Lord has welcomed and integrated persons with disability in the New Testament must also be emphasized. And if that is countering with the passage that we read in the Old Testament, we may come to a better understanding. These are the points that we discussed. Thank you. Thank you. That's wonderful. Thank you, Daniel, for the sharing. And I would like to invite also from different groups in this particular text, Exodus chapter 4, verses 10 and 11, from different group members, if you would like to share or throw in some point in your personal experience that you want to share, I would like to give time to it, maybe 1 or 2 person. If not, then I would like to request the group number 2 from the passage 2 Corinthians chapter 12 verse 9, a group of Reverend Vinod Victor. If there is anyone to represent, then you may unmute yourself and share. Praise the Lord. This is Amar Singh Bish from Uttarakhand. So yes, we know that we all are the divine designer of designer of our divine God. But sometime in our group, this question came: if suppose directly, if you say someone that disability is a design of a God, maybe it will hurt him or maybe it will discourage him. But this verse, this text, tell us that and give us encouragement that complete surrender in faith and obedience is important. So in our group, we come to know about that this is important to have a complete surrender in the faith and obedience. And then it is important that if you remember this, it is important that we remember that the grace of a God is enough for us. Thank you. Thank you, Amar, for the brief sharing from the discussion that you have had. In our group, since most of our group members are translators, so unable to share from our group, so I'll be the person who will be shared. So we have a brief discussion in our group, which many of our group members have shared. It is that God has given the authority, and the household of God is for everyone, and it should be no differences into no matter what we worship and no matter how we worship. And the authority which Jesus has portrayed in the act of cleaning and the healing is also to bring down the authority of the temple that has overlaid for based on the interest of the authority of the temple for the scribes, for the Pharisees, and for all the ones who are enjoying the benefits of the temple welfare there. And one of the group members we also discussed is that portrays for example, the in our present context, the festival of Harvest Festival is also one of the ideal example which try to show off the riches rather than the real intention of the Harvest Festival, but to show off the riches and the pride of the church, because that leads to the false representative of the prosperity gospel, where if you buy it, then the blessings will be 100-fold, 10-fold upon the person who buys it in any auction or in the Harvest Festival procedure. And the other one which we have discussed is also the identity of the house of prayer and the real intentions of the house of prayer, because many of the church, unfortunately, are identified with the richness and the financial undertaking of the church rather than the real mission or the mission standpoint that has to portray towards the downtrodden, the marginalized, and the people with disability in particular, as we discussed today. And it is also to portray
it is a call to the church, everyone, not in terms of practices as an identity, but also in terms of the mission, that the priority should be not on the structure or the beneficiary of the church leaders, but for all the downtrodden and for everyone. So this is a brief discussion that we have had discussed today. So now I would like to invite everyone, if you have any thoughts or any feedback that you would like to share, or the questions that you would like to share to the panelists of the person who have shared in the reflection, that you may raise your hand and ask a question, one or two, or a discussion that you have experienced it in your life. यदि किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। यस, मेरे पास एक सवाल है कि दाऊद एक जगह तो बता रहे हैं कि वो घिन करता है, मगर एक जगह अगर हम देखें तो वो एक जो डिसेबल व्यक्ति था उसको अपनी डाइनिंग टेबल में बिठा के रिस्पेक्ट भी देता है और उसको जो है बुलाकर अपने साथ खिलाता है, ऐसा भी है। सो ये दोनों एक विरोधाभास नहीं लगता? Pastor Narendra, could you please translate that question into English? Hello, yeah. Could you please repeat? आप सवाल पूछेंगे दोबारा, क्या पूछा आपने? मेरा सवाल है, दाऊद जो है एक जगह पे दिखा रहा है कि वो घिन करता है ऐसे लोगों से, और अगर हम देखें अबू सलेम जो उसका एक जो अपाहिज था उसको अपने टेबल पे बुलाता है, खाना खिलाता है, उसे कपड़े पहनाता है, तो जरा विरोधाभास नहीं है? ये ऐसा क्यों है? So he is asking whether it is not contradictory. At one incident, David, it seems that David hates people, those who are with disability, and on the other hand, he invites Jonathan's son at his table, who was not able to walk properly. Is it not contradictory? Okay. Dian, Yeah. would you like to assign that to one of your panelists? Yes, I would like to request Reverend Vinod and Reverend Devras Ayah, Devajoti Ayah, to kind of respond from the Old Testament and the New Testament perspective. Well, I would simply say, in the case of Mephibosheth, David actually asked, is there anyone to whom I can show favor in the house of Jonathan? And he finds one who couldn't walk, both legs being affected because of a fall. He invites him to the table, respects him, and gives him the due respect that anybody. So because he was disabled, there is no disrespect shown. That's one side of it. The other side, you rightly said, the places into the temple, other places where there is exclusion of the disabled, that is seen in several of the Davidic passages. We can't see this as a contradiction, but as part of life. That contradiction is part of life. We also accept people with disabilities into the table on one side, but that is that mindset inside, that framework inside that we were talking about several times, that there is something wrong with it. We should keep them away from this sanctuary. We could keep them away from ordination. We could keep them away from positions. We could keep them away from leadership roles. All those contradictory thinking, which is part of our collective subconscious, still remains, though we show a personal goodness to several people living with disability. So that is not only David's problem, that is a problem of you and me even today. ब्रदर, होप कि आप समझे होंगे क्या बताने की कोशिश किया गया है। Thank you, Vinod Achan, for the clarification. And one last question or clarification or any thoughts that you would like to put before we और किसी के conclude. पास कोई सवाल है, कुछ स्पष्टीकरण है तो पूछ सकते हैं।
If not, then I would like to end from my side and with a note of thanks from the NCCI IDEA, National Council of Churches in India, Indian Disability Ecumenical Accompaniment, for your active participations and your interest in this today's session. So to conclude with it, I would like to hand it over to Jessica for the concluding remark. Over to you, Jessica. Thank you so much, NCCI Team IDEA, for this enlightening session. Despite technical challenges, I think we have all, this is the first pre-conference where we have had interactivity, and we are very thankful to NCCI IDEA team for taking on this challenge. And I'm sure all of you have benefited by listening to these three texts that we discussed. Though we have had many sessions where we've been listening, this is the first time we were able to facilitate interaction with all the, some of the participants at least, and I think in the groups, all of the participants. Disability can be overcome by design, and disability is part of the diversity of God's creation. Jesus broke the barriers in the religious establishment to overcome these barriers created in our attitudes and in our religious structures to create accessibility for people with disabilities. So these are our takeaways from this session, and we are very thankful to NCCI Team IDEA, the team of Mr. Jian, Mr. Lemma, Dr. Aishwarya Rao, Reverend Devajyoti Kumar, Reverend Vinod Victor, and the General Secretary, Reverend Asir Ebenezer. We are thankful to each of you for having taken time to bring us these enlightening insights from these biblical texts. Our thanks also go to our sign interpreters for the day, Mrs. Gladys and Mr. Dandra, Mr. Sundar, and also Hemima, who was here as standby. We are also thankful to our translators for this day, Reverend Adrian Deepak for Kannada, Reverend Joel Tenraj for Tamil, Mr. Ribin and Mrs. Sneha for Malayalam, Pastor Narendra and Mr. Moses Gaur for Hindi. We are very thankful that we are able to bring to you all these translations because of the hard work of the translators and the sign interpreters. Thank you very much to each of you. Our concluding pre-conference will be next week on 24th November, Wednesday, same time at 6 p.m. We hope that you will all join us again, and we promise you again an exciting time where we will listen to sharing from church leaders. We will have an introduction to Engage Disabilities Hubs, and we hope that you will find time to join us and rejoice with us as we conclude this series of pre-conferences next week, November 24th at 6 p.m. Please do join us. Thank you for staying with us today until this time, though we have overshot our time. Thank you for staying with us. God bless you, and see you next week.